Good evening, everyone out there. Before I start, can some of you raise your hands if I can reach you, just to make sure that the audio system is working. Thank you. I can see a lot of hands. Thank you. So this is our Math on Fridays, week 49, and in today's session, I'll be covering past year IIT JEE problems based on differential calculus 1. So those who have not started this topic, the limits and continuity, and generally I'm sure like everyone who's going to appear for 2013 would have done this topic by now. So I know the groups I teach. So we did this we did this topic few months back. So, but if people are there from 2014 batch, so even to 2014 batch, in all my groups, I have already covered the limits and continuity topic. So, but if not, then I don't think this webinar is for you. You would not be able to understand most of the questions. So this is I'm planning to discuss uh, in the next few Math on Fridays. I'll discuss questions based on calculus. So this is the first class based on calculus, and you must know by now that calculus is one of the most important topic for JEE exam, because most of the questions are from at least like 30 to 40% of the questions they ask from calculus topic. Though calculus is also a big topic, but still uh, like you see a lot of questions in exam based on calculus. So so just to give you a heads up, like in today, in tomorrow, in next week's class also, I'll be covering this differential calculus topic. Uh, and then some of the I will not be able to cover all the questions based on differential calculus 1 in this session, so I'll continue with DC1 in the next session, but I'll have to take questions from differential calculus 2, which are based on increasing, decreasing, local maximum, local minimum. So you might have a third session also based on differential calculus. So generally I suggest that, like, some of the people think that they go through recording and they don't join the live session, but my recommendation is, like, if you have internet connection and you are available at home, you should definitely come to these sessions. If there is something you already know, then you keep on doing your stuff side by side. But it's so difficult to pull a recording at a later stage and then go through that. Generally, the inertia is so big that, and you have a lot of things to do. So generally, it doesn't happen. So if and when you it's generally it's easy if there is a fixed time, and if there is a fixed plan for it. For us, for humans, it's very easy to do things. And the discussion of JEE questions is not that I'm giving you the solutions, because solutions are available everywhere on internet and books and all. It is that the feeling and the just give you a feel of the JEE question, and the message I want to pass you is that the most of the questions are based on fundamentals, and these, you know, these fundamentals very well. Only thing is, you have to be confident when you go in exam. So sometimes you start doing things which are not important for exam, maybe some of the complex books which is above your level, but you don't need that level in exam. So people do people do a lot of questions just to build their confidence, and if by doing that they spoil their confidence, they affect their confidence, and because of that they're not able to apply fundamentals, is totally going in a wrong direction. So just see the beauty of the questions that come in exam. So there's short questions and smart questions, and based on the core fundamentals, and that will give you idea like what you're going to face when the exam will come. So this is first of all, I have
I've grouped the question in such a way that in the beginning part I'll be discussing all the questions based on limits. So yeah, and then general question based on continuity and differentiability. So but my focus mainly is on limits in this class, because all around 10 questions I have based on limits. So I'll be covering them in most of this class. As and you know that these are the questions which came in past year IIT JEE starting from 2007. So it is the last 6-year papers I have gone through: 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Because objective exam or this pattern came in 2006, but in 2006 they did not give the paper to take home. So they give the exam, they give the question paper, but they took the question paper back. So the question paper is available on internet, but I thought like let's start from 2007. So see, this is a question where we have to work out this limit, and the in limits we have formulas, or we call them templates. So the template and formula we're going to use here is where base approaching 1 and power approaching infinity. It's an indeterminate form that we need to evaluate, we need to work out. And the type of indeterminate form is where base approaching 1 and power approaching infinity. And the template or the formula that helps in solving questions based on this indeterminate form is this: limit h approaches 0, or we can say x approaches 0. Another thing I forgot to mention, that see this, I'm taking this webinar from my home in India, and I'm not sure what kind of bandwidth I have here, and whether that can broadcast the webinar or not. So in case you feel disturbance in the webinar in terms of speed and all, so don't get panic, then it's the best thing to go through the recording, right? So anyway, I'm recording this session, so maybe tomorrow you can go through the recording. But don't get panic, and don't bother your parents. So limit x approaches 0, 1 plus x to the power 1 by x. So this equals to e. So we're going to use this template, and we can check that it's like limit x approaches 0. Here we have 1 plus x ln 1 plus b square, and on power we have 1 by x. So you can check yourself, as x approaches 0 means this part approaches 0, right? So this part approaches 0 means this whole thing is approaching 0, or we can say this whole base is approaching 1. So base approaching 1 and this power approaching infinity, because as x approaches 0, so it's 1 by 0 and this power will approach to infinity. So what we can do is generally in this question where we this is, we identify what is x here, and the reciprocal of that x we form in the power. So just an example, if we have 1 plus fx, then we make 1 by fx in the power, right? Whatever, if we have gx in the power, gx को छोड़ दिया, gx नहीं लेके आए, we have to make reciprocal of this fx in the power, and once we have reciprocal of 1 by x, we replace this by e, it becomes e to the power gx. So in this question also, what we do the same thing, it is 1 plus x ln 1 plus b square. So we make this thing in the power, reciprocal of this in the power. So we divide by that and multiply by that. So we divide by that is 1 by x ln 1 plus b square, and we multiply with that x ln 1 plus b square divided by x. X was already there in the denominator. Now this whole thing becomes e. So it is e to the power, its limit x approaches 0. Now it's simplified too, because we just replace this whole part which I'm crossing out by e. So it is e to the power, and also we cancel x with x. So it is e to the power ln 1 plus b square. Right? And I know you know this property, e to the power ln on the same base e. This becomes 1 plus b square. This is equals to 1 plus b square. Now it is no more indeterminate form. So it is 1 plus b square. Right? So we are using this property. If we have e to the power ln fx, we can write this equal to fx. That's what we use in the last step. Now we work out this limit, and it is 1 plus b square, and the right hand side given is 2b sine square theta. So it is minus 2b sine square theta. So you can see it's a quadratic in b. We can solve for b. Karna, what we are supposed to find? We are supposed to find the value of theta.
So this is at this point of time you might get confused that we have to solve for theta, but it's a quadratic in B. So are we going to find B or theta? So let's do it. Let's see what will happen. And it's not going to take much time solving this quadratic, because we have to apply the formula B equals to 2 sine theta, 2 sine theta or sine square theta. Let me check it. It's sine square theta. 2 sine square theta plus minus root of 4 sine square theta just 4 sine to the power 4 theta minus 4. Yes, so you can see here divided by 2. We can take 4 out, it will come out as 2 and we cancel that. So it is sine square theta plus minus sine root of sine to the power 4 theta minus 1. You know, we write this as 1 minus sine to the power 4 theta, because you know sine to the power 4 theta is always less than 1. So I take minus common and I write this as root of minus 1. So basically this is sine square theta plus minus root of 1 minus sine to the power 4 theta into iota. And b is a number which is a real number. That's given in the question. B is given that b greater than 0. And complex numbers cannot be positive or negative. Just mention that. So they nowhere wrote that b is a real number, but that's understood b is a real number. So if b is a real number, then this part must be 0. Imaginary part must be 0. How can b be complex? So this must be 0. So the theta नहीं जो दिख रहा था यहाँ पे theta यहाँ पे आ गया. So this means that sine to the power 4 theta equal to 1. So it is, you know, sine theta equal to plus minus 1. So it's theta equal to plus minus pi by 2. Because theta lies between minus pi and pi, so we'll have just two values of theta between plus minus 1. Right? So if you see this, the number of steps I have, especially in the beginning of this question, I took to write this. I need to reduce the number of steps, because you know, like the people who are aiming for a good rank, so they need to work on the speeds in the exam. They need to work on the speed in the exam. And definitely if you write less number of steps, you save your time in the exam. So if you look at this question, if I let me change the, see if you see this, I'm using a red pen now. So if you look at this expression here, you can see x approaches, here हमने देखा था, as x approaches 0, this part approaches 0, base approaching 1, power approaching infinity. So this is something you have to make in the numerator. Reciprocal, this you have to make in the numerator. The very first step you should have written this, and even though no need to write limit x approaches 0, but you must be used to of writing this. So you know कि reciprocal बन ही जाएगा. इसका reciprocal multiply divide करना है हमें power में. We take the reciprocal, make the reciprocal of this in the power, and then you replace this with e. You start straight away write e, and then you x into ln 1 plus b square. रेसिप्रोकल बनाया था आपने, तो ये ओरिजिनल बचेगा पावर न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय x. So that's the very first step you should have written that, because this is not a question we are thinking how to solve it. You know how to solve it. This is such a fundamental, base approaching 1, power approaching infinity, and this is what you do. And then cancel this, and then this is 1 plus b square and equal to minus 2 sine square theta equal to 0. So you can see that earlier I wrote 4-5 steps to do this much, but I could do the same thing in 2 steps. So right, so just be careful, don't write unnecessary steps. Now this is a question that came in JEE 2009 paper 1. So it's like limit x approaches 0, and as x approaches 0, we can first thing is we need to check whether it's indeterminate form or not, what type of indeterminate form it is. As denominator approaches 0 is x approaches 0, so denominator approaches 0. In numerator x approaches 0 means
we have a minus approaching 0. So we can quickly check it is a 0 approaching 0 divided by 0 or approaching 0 divided by approaching 0. Now so for such question, and if you look at this, it's generally the kind of template formulas we have, none of them is applicable. None of them is directly applicable. We have formula log of 1 plus x by x equals to 1. We have limit sin x by x equals to 1, 10x by x equal to 1. We have e to the power x minus 1 by x equal to ln a, right? And then we have 1 plus x to the power 1 by x equals to. So if you look at this, none of these templates is quickly visible to be used on this. So the other option is we have to apply L'Hospital's rule. Sometimes we use expansion to solve limits, but expansion is also not possible because we have this square root thing whose expansion we don't know. We don't have expansion. So LH rule is obviously the step that we need to apply here. So I don't think you need to spend time on finding the way to solve this question. It's obviously you need to apply L'Hospital's rule. So derivative of denominator is 4x cube, and that derivative of numerator, derivative of a is 0 because a is constant, and then derivative of square root term is minus 1 by 2 square root of a square minus x square into minus 2x. So I'm using the derivative formula. I'm using the formula रूट ऑफ, इसको मैं डिफरेंशिएट रूट ऑफ एक्स का मैंने फॉर्मूला यूज किया, रूट ऑफ एक्स इज 1/2 रूट एक्स. सो but chain rule लगाया because we have not root of x here, root of a square minus x square. So after that minus 2x by 4. Now after taking this, we can simplify this. Minus minus will become plus. This 2 will cancel out with this 2. This 2 with this 2 from this side. And then don't need to write it. What I'm have to make it neat so that you can clearly see. Otherwise, we would like to reduce steps. Right? 4x cube. Now as limit x approaches 0, it should be denominator. What is happening to denominator? Denominator approaches 0. Now what is happening to numerator as x approaches 0? As x approaches 0, we can take let's take x common and cancel out, then only we'll see the clear thing. Otherwise it's a misleading thing. We take x common and cancel out. So we take x common, it becomes 1. This also becomes 1. Denominator में power बनेगी आपकी x square. Instead of x cube, now we have x square. Now see, as denominator as x approaches 0, this x approaches 0, denominator approaches 0, and numerator में अगर x 0 हम डालते हैं, so it is 1 by mod of a, because root of a square, that's mod of a minus half. Yeah. So you can see if numerator approaches to a finite value which is not equal to 0, numerator ये है. अगर suppose I'll just give an example, if numerator is say approaching 1 and denominator approaching 0, then this is infinity. Answer is it's approaching to infinity. That's it. But it is given that L is finite, the limiting value is finite. For limiting value to be finite and denominator is approaching 0, it is must that numerator should also approach to 0. It should be 0 by 0 indeterminate form. Because 0 by 0 indeterminate form can be simplified to a finite value. But if we have non-zero value k divided by approaching 0, it is infinity or minus infinity depending upon plus or minus है. तो यहाँ पे it's necessary that numerator should approach to 0. So it means 1 by mod a minus half equal to 0. So we get mod a equals to 2. So or a equals to plus minus 2, तो हमारा ये a choice तो match करेगी, a equals to 2. Then see, if you look at the choices, this is a more than one choice correct type of question, more than one choice correct. So we have a limit का भी answer है. Answer is L choices in terms of L are also given. So we need to work out this limit also. So this means we need to further simplify this. We need to we need to evaluate this again. So we can again apply LH rule, but now we can replace a equal to 2. So a square is 4. So now limit x approaches 0, we'll apply a derivative formula. Derivative d by dx of 1 by root x is, it is minus 1 by 2x root x. So it is 1 by minus 1 by 2
4 minus x square to the power 3 by 2, or we can say x root x, so we can say this 3 by 2 into derivative of 4 minus x square, that is minus 2x. This is 0. This is 8x. Now this minus minus will become plus. This 2 will cancel, sorry, this x will cancel out with this x. This 2 will cancel out with this 2. So we have 1 by 8, 4 minus x square to the power 3 by 2. And then we put x equal to 0. X approaches 0. X approaches 0 में आएगा 1 by 8 into 2 cube 8. So 1 by 64. So 164 choice है 1 by 64. Yeah, 1 by 64 is there. C choice. Right, so see, we applied LH rule 2 times in this question. After applying LH rule for the first time, we got the value of A, and then after replacing the value of A, we again applied LH rule, and we got the limiting value as 1 by 64. So it's like LH rule is something everyone knows how to apply. So this is, if you're not, in case if you're not able to score marks in this question, then the only reason which I could see is that maybe you are, maybe your confidence is destroyed because some other question you lost your confidence in the exam, that or you don't get time to solve this question, maybe you never get a chance to reach this question and try it out. कि आप ट्राई करेंगे तो जनरली तो ट्राई करके कर भी लेंगे तो some of you the problem might be the kind of time they'll take to solve it. कि अगर 2-4-5 मिनट लगा दिए इसमें, it's not advisable. Maximum a minute or a couple of minutes. Couple of minutes should be the time you should take to solve that question. Now we'll go to the next question. This came last year in JEE 2012 in paper 1. So again, it's a typical question. So let's see. Limit x approaches infinity. We have to work out this. So generally, when limit x approaches infinity, it's advisable that we need, or generally it's advisable that we express in ratio form, because if it's in ratio form, it is infinity by infinity or 0 by 0 बना लेंगे. So at least we can apply LH rule, or whatever you want to do. It makes sense to express in ratio form. Indeterminate form देखना है तो right. So let's take LCM. It is x square plus x plus 1 minus ax multiplied with x plus 1 minus b multiplied with x plus 1 divide by x plus 1. So after taking LCM, we got this expression, and this limit exists equals to 4. We have to find a and b. So question is not to evaluate limit, question is to find the values of a and b, where limiting value is 4. So we combine terms of x square we have from this side, x square term from this side, so it's 1 minus a into x square, and then we have linear term, x from this side and minus ax from this side and minus b, so it is 1 minus a minus b into x, and then constant term 1 from this side and minus b from this side. Yes, divide by x plus 1. Now it is infinity by infinity indeterminate form, and infinity by infinity x up. So to what we can do here, generally by infinity indeterminate form, either the we can apply LH rule, या तो LH rule apply कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं we divide by the highest power. That's what we do when it is infinity by infinity indeterminate form and algebraic expressions are involved, that we divide by the highest power of x. So we divide by x square. In this case it is 1 minus a plus 1 minus a minus b. X divided by x square is 1 by x plus 1 minus b by x square. Divide by x square is 1 by x plus 1 by x square. And now you can see so this part approaches 0. As x approaches infinity, this approaches 0. So denominator approaches 0. Same way, this part approaches 0, this part approaches 0. This is 1 minus a. Now if you look at this, अगर हम इसको अगर देखते हैं, न्यूमरेटर में ये 0 है, ये 1 minus a, numerator approaches 1 minus a, denominator approaches 0. Now and you know, if 1 minus a is again, जैसे अभी डिस्कस किया, it's a finite non-zero. अगर इसको 2 मान लेता हूँ, 2 divided by approaching 0 is infinity. So it means numerator has to be 0. Numerator 0 होगा तभी 0 by 0 indeterminate form बनेगी. Then only it can have a finite answer. So one numerator should be 0. We get a equal to 1. First equation मिल गई, a equal to 1 आ गया हमारा.
अब a इक्वल टू 1 आया, मैं नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b ऑल्सो। तो b के लिए हमने इसको 1 माइनस a को 0 किया, एंड वी डू द सेम थिंग अगेन वी डिवाइड बाय द हाईएस्ट पावर x। सो वी हैव 1 माइनस a, मतलब x कॉमन लेके कैंसिल कर दिया डिनोमिनेटर में से, दिस आ गया प्लस 1 माइनस b x, 1 प्लस 1 बाय x। नाउ as x approaches infinity, this is approaching 0, this is approaching 0, and this limiting value is 1 minus a minus b divided by 1। अब इस बार हमारी लिमिट वर्कआउट हो गई है, और लिमिट तो 4 गिवन है, दिस इज इक्वल टू 4। So we got two equations in two variables. A तो 1 आ गया, सॉल्व क्या करना है, A तो 1 ही आ गया, and then we have to replace A equal to 1 and we get B equal to minus 4. So A equal to 1, B equal to minus 4. It's a B choice. So you could see that the kind of question it is, this is a very straightforward question. Even you can try it using LH tool. अब कर लेना, I'm short of time, so I'm sure it's going to be the same level of complexity. This came in J 2008, paper 1. So again the kind of question it is, like it's not a big deal, easy question है कि पहले देखते हैं, पहले इसमें है we need to work out, ये लिमिट निकालनी है, लिमिट x approaches 1 plus, so it's a right hand limit we have to find, 1 plus gx, x minus 1 to the power n divided by log cos to the power m x minus 1, ये expression है, and it is given that and let p be the left hand derivative of this. So limiting value is given p, given x की limiting value p, and p is the left hand derivative of this if I assume this function y equal to x minus 1 है, p is left hand derivative at x equal to 1, x minus curve पे, ये x minus curve, this is value 1, it's p equal to left hand derivative LHD of mod of x minus 1 at x equal to 1. This is so simple. 1 पे left hand derivative देखना है, 1 पे left hand derivative means slope of this line, and this line is slope of this line is minus 1. Can you make out left hand derivative of mod of x minus 1? mod of x minus ग्राफ बना लिया, उसका left hand derivative 1 पे तो ये है, इस लाइन का स्लोप है, and that is minus 1. So what we have is now right, so p is minus 1, this is equal to minus 1, ये में minus 1 की बना है. Next thing is we apply this right hand limit formula, limit h approaches 0, f of 1 plus h, easy to apply right hand derivative formula. So what we have is limit h approaches 0, replace 1 plus h, so it is h to the power n divided by log cos mh, right? So see this is, अब यहाँ choices हमें m और n की values की form है, हमें m और n की values comment करनी है, m और n क्या होंगे. So we apply h 0 by 0 indeterminate form. If you replace h equal to 0, h approaching 0, so it is 0 by 0 indeterminate form. We apply LH rule. Limit h approaches 0, h times h to the power n minus 1 divided by log है, यहाँ पे log cos है, so 1 by cos to the power mh into derivative of cos mh, m times cos m minus 1 h into derivative of cos is minus sin h. Right, so applying LH rule, you can see LH rule था यहाँ पे, we have to differentiate denominator, and derivative of denominator is this. So log है तो 1 by cos, और फिर cos का derivative, पहले cos की power है तो power कम करिए, फिर cos का derivative sin minus sin. So now let's start simplifying this. So as h approaches 0, cos, cos is 1, so this is approaching 1. Even this, in fact, this is also approaching 1. So it is simplified to limit h approaches 0. There is a part that is approaching 1. अलग कर लिया उसको. You have h to the power n minus 1. Oh, sorry, it should be n. It should be n. Derivative लिया तो n ही तो आएगा इधर. So n times h to the power n minus 1, n by m, and we have cos gone minus sin h. Right. Now you can see, अब यहाँ पे ये 1 बनना चाहिए sin h by h, तभी लिमिट फाइनाइट होगी. अब ये 1 बनने के लिए n कम से कम n should be greater than 1 होना, n should be 2 or more.
राइट, तो n को 2 ले लिया आपने, n2 होगा तो साइन एच, n2 डाला आपने तो साइन एच बैच 1 हो गया, 2 से फायदा होगा, साइन एच बैच 1 हो गया, और आंसर आया आपका n बाय एम माइनस n बाय एम, माइनस है, अगर लिमिटिंग वैल्यू तो दी नहीं हुई, हाँ माइनस, सॉरी माइनस है, माइनस n बाय एम है, अब n2 है तो -2 हो गया आंसर, आंसर -1 आना चाहिए, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट लिमिटिंग वैल्यू का आंसर -1 है, तो आंसर -1 आने के लिए m क्या होना चाहिए, m2 होना चाहिए, n2 और m2 साथ में देख भी लेते हैं कि यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाया आपने एल एच रूल का, डेरिवेटिव लिया डिनोमिनेटर का, तो बस ये था कि m 0 ना हो, m 1 तो होना ही चाहिए, m ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो यहीं तो आ ही रहा था, लेकिन m को 1 लेते हैं तो आंसर यहाँ -1 नहीं आएगा, वो आंसर 2 से ही आएगा, so it means m should be 2 and we found 2, so that's the answer. For again I repeat, for answer to be -1, this ratio should be equal to 1. For this ratio should be equal to 1, we already know n -2, so we have to make sure that m should also be 2, so that ratio is 1. So it's a px is a polynomial of degree 4 having extremum at x equal to 1 and x equal to 2. So it's like it has a local maximum at extremum दिया हुआ है, तो local maximum और minimum कुछ भी हो सकता है at x equal to 1 और 2 है, so इसका मतलब हो गया derivative is 0 at x equal to 1, dy by dx at x equal to 1 equal to 0 as well as dy by dx at x equals to 2 equals to 0. Now px is a polynomial of degree 4 है, now let's start working out this limit, x approaches 0, we take LCM x square plus px by x square, px is a function of x. Now as x approaches 0, numerator should approach to 0, so then only it will be finite, 2 तभी होगा, तो यहाँ पे बस ये हम देख सकते हैं कि px में कांस्टेंट नहीं है, px पॉलिनोमियल होगा ऐसे, ax to the power 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d नहीं हो सकता इसके अंदर, d होगा तो x इक्वल टू 0 पे ये 0 बनना चाहिए, x इक्वल टू 0 पे, then only it is in determinate form, so there's no, but we just have to remember that when we find px it should have no constant. Now we apply L'Hospital's rule, limit x approaches 0, derivative of numerator is 2x plus p dash x, divide by 2x. So again it's the same thing, जो डेरिवेटिव है उसके अंदर x होना चाहिए, डेरिवेटिव में x होने के लिए, सॉरी क्यूब की टर्म भी आएगी, क्यूब की टर्म रह गई, dx होगा, e होगा, सो इट मीन्स कि dx भी नहीं हो सकता, राइट, कि px हमारा इस फॉर्म का है, x टू द पावर 4 प्लस px क्यूब प्लस cx स्क्वायर, ये अगर डेरिवेटिव लेते हैं इसका, क्योंकि डेरिवेटिव में x होना ही चाहिए, तो हमारे आइडिया लग रहा है हमारा डेरिवेटिव इस फॉर्म का आ गया, डेरिवेटिव में कुछ कांस्टेंट हो सकता है कि x होगा उसमें, क्यों x कैंसिल होना चाहिए, अदरवाइज ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगी, और हमें ये पता है x -1 इंटू x -2, राइट, हमें ये करने की जरूरत नहीं है, एंड वी नो x इक्वल टू 1 एंड x2 आर दोस पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज 0, सो डेरिवेटिव के फैक्टर है x -1 x -2, right, those who have not done this maximum minima topic, so there's nothing much, only thing is we know that at x equal to 1 and x equal to 2 they are the extremum, means they are local or local maximum और local minimum ये point है, और उसकी property की derivative 0 होता है local maximum minimum पे, this is your local maximum point, so slope of tangent is 0 at this point, local minimum point slope of tangent is 0, तो ये this is the form of, हमारा ये derivative की form आ गई है, right, तो अब यहाँ पे रख के x कैंसिल कर दिया हमने, x कैंसिल करेंगे करा तो हमने ये आ गया 2 प्लस k टाइम्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय 2, लिमिट x अप्रोचेस 0, सो द लिमिटिंग वैल्यू देख सकते हैं यहाँ से आ रही है 2 प्लस 2k बाय 2 इक्वल टू 2, सो 1 प्लस k इक्वल्स टू 2, k इक्वल टू 1,
तो k तो पहले निकाल लिया हमने, 2 है, 1 है। तो हमारा यहाँ से अब ये हमारा पी एक्स आ गया, पी डैश एक्स आ गया हमने k1 निकालने के बाद, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और वी कैन से x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 3x प्लस 2, और ये हमारा डेरिवेटिव आया है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब पी एक्स निकालना, इंटीग्रल कर दिया, सिंपल इंटीग्रल, so it is x to the power 4 by 4 plus x cube, right, plus x square. Yeah, this is the answer, but we need to check the answer. Sorry, we need to करना क्या, P2 निकालना है, Px आ गया, P2 निकालना है, सॉरी P तो क्वेश्चन तो हो गया, कुछ नहीं करना, P2 निकालना है, P2 is 4 by 4 plus 2 cube 8 वो माइनस था, यहाँ पे माइनस आएगा, so it's like minus 8 2 to the power 4 है, 16 है, 16 by 4 minus 8 plus 4, so it is 4 minus 8 plus 4, 0 आ रहा है, right? So this was an interesting question, I'll say, because you know, though not difficult, but it so other option is you could have assumed the function as ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus d plus c, या पूरे को फंक्शन को यहाँ रिप्लेस कर लेते, मैंने उतना पूरा फंक्शन रिप्लेस नहीं किया, आई डिड दैट बाय कि पहले देखा हमने कि इंडिटरमिनेट फॉर्म, इट शुड बी इन इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो पीएस के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तभी 0 by 0 बनेगा, एंड देन डेरिवेटिव लिया हमने, डेरिवेटिव में भी सेम यहाँ एक्स का फैक्टर होना चाहिए, तो डेरिवेटिव एक्स का फैक्टर होने का मतलब है कि उसकी ये फॉर्म होनी चाहिए डेरिवेटिव की, क्योंकि and also we know that x equal to 1 and x equal to 2 are the roots of the derivative, because at these 2 points we have extremum, at these 2 points we have extremum. ये करने के बाद हमने वर्कआउट किया तो हमारा k equal to 1 आ गया, लिमिट वर्कआउट करेंगे k equal to 1 है, अभी k तो 1 आ गया, बट वी हैव टू फाइंड द फंक्शन px, तो फिर डेरिवेटिव के पास गए और डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर लिया टू फाइंड px, बट यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम नहीं लगाया इंटीग्रेट करने के बाद, क्योंकि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, हम पहले ही देख चुके हैं कि इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है। Now this is again came last year, another question based on limits, but this was in paper 2. So a quadratic equation is given, and see the coefficients of this quadratic, they are the expression in terms of a irrational expression in terms of a, we have to find alpha and beta are the roots, alpha will come in terms of a, beta in terms of a, alpha beta इसके roots हैं, वो एक ही फॉर्म में आएंगे, then we have to find their limit as a approaches 0 plus, तो उसकी राइट हैंड लिमिट एट ए निकालना, ए राइट हैंड लिमिट एज ए अप्रोचेस 0 निकालना है, सो बेसिकली अल्फा बीटा निकालना है, तो अल्फा बीटा निकाल के उनको आपने देखना है कि उनका एज एक्स अप्रोचेस एज ए अप्रोचेस 0 व्हाट विल हैपन टू द लिमिटिंग वैल्यू, पहले अल्फा बीटा निकाल के फिर, अब this question you can get stuck if you start finding alpha and beta, so it's such a complex expression, you try to splitting the middle term, you cannot do it, you applying this formula minus e plus minus root d by 2, you cannot do it, so you have to start with alpha and beta, यहाँ से करना था आपने alpha plus beta से, some of the root से, some of the root is minus, I'll write in fractional power form, minus a plus 1 to the power half minus 1 divide by, and the coefficient of x square, a plus 1 to the power 1 by 3 minus 1, ये some of the roots. So now if we take limit, इसका हम क्या कर दिया हमने, दोनों साइड का लिमिट a approaches हमने ये लगा दिया a approaches 0, a approaches 0 plus, जो मेरे बाद में लेना पहले ले लिया हमने, so in the आगे this is limit a approaches 0 plus alpha plus limit a approaches 0 plus beta, दोनों साइड पे, इस साइड पे भी आ जाएगा लिमिट a approaches 0 plus this a plus 1 to the power half minus 1 over
a plus 1 to the power 1 by 3 minus 1. Now we work out this limit. To work out this limit, we can apply LH rule. So 1 by 2 a plus 1 to the power half divide by 1 by 3 a plus 1 to the power 1 by 2 by 3. As a approaches 0, तो ये सारा 1 हो जाएगा. Answer is 3 by 2. So what we get, इसको मान लेते हैं, ये दोनों निकालने हैं. इसको मान लेते हैं m और n. So what we get is m plus n equals to 3 by 2. Same way, alpha beta is c by a. ये c by a. We do the same thing again. Apply this limit. A approaches 0 plus to this. Limit a approaches 0 plus of this. Now we apply L'Hospital's rule. So derivative like 1 by 6 a plus 1 to the power minus 5 by 6 divide by 1 by 3. So as you replace a equal to 0, this part will become 0. If you replace a equal to 0, ये part बचेगा, that is half. So now ये हमारा है, वो m plus n था, m minus n है. So m plus n is 3 by 2. mn is half. Now we need to solve this. हमने देखा m minus n whole square equal to m plus n whole square minus 4mn. If we apply this, m plus n whole square is 9 by 4 minus 4 times m into n, half. So it is half. Sorry, 1 by 4. हमारा m minus 1 का whole square 1 by 4 आया है. m minus n equal to plus minus half है. So m plus n 3 by 2 है. m minus n को अगर half लेते हैं, ऐड किया, m equal to 2 by 2, m equal to 1. m को 1 डालते हैं अगर, then n is half. Right. Now summing का 3 by 2 हो गया, m1 n half. माइनस भी है इसमें, डिड अ मिस्टेक, माइनस साइन मिस्टेक. ऐड किया तो 2 आया. ओह सॉरी, इससे आंसर नहीं आ रहा है कि ऐड करके तो 2m इक्वल टू 2 आ रहा है, नहीं m इक्वल टू 1 है. माइनस हाफ लेंगे तो ऐड करके 1. हाँ, m हाफ. Maybe other value of m minus 1, if you take m plus n equal to 3 by 2. Mistake, negative तो कहीं आएगा नहीं, positive yes. If you take minus half and add 2m equals to 1, m equals, ये भी positive आया. Oh, some of the roots में माइनस आना था ना, some of the roots, yes, some of the roots में तो माइनस आना था, ये माइनस रह गया, शुरू वाला माइनस. तो some of the roots का माइनस था 3 by 2. So when we add, so 2m equals to minus, ऐड किया तो माइनस, या हाफ आ गया, ये माइनस 1 है, सॉरी, यस, m इक्वल टू माइनस हाफ आ गया.
Yes, if we add half and minus c by 2, it is minus 1, m equal to minus half, m is minus half, then yes, n is minus 1. Yes. So there's a mistake that when I apply some of the roots formula, it's like I missed out the minus sign. So you can see this question came last year and just very close. And then uh, it's not that difficult, but I would not say it's an easy question, because the limit thing confuses you if you get into solving for alpha and beta, because then you have to find the limit, then you're gone. You cannot do that. Some of the roots and product of the root is the key in this question. So I would say the average rating, it's the ये ऐसा नहीं है कि सॉल्व कर ही देंगे एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन था लास्ट टाइम, मतलब आइडिया की बात, अगर जरा सा आप गलत डायरेक्शन में चले गए सोचने, देन यू आर गॉन, दैट फाइंडिंग अल्फा बीटा तो ट्राई करके फिर आप में यू माइट डिसाइड टू लीव इट. तो वैसे सम ऑफ द रूट्स पार्ट ऑफ रूट्स तो करते भी हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील. नो दिस इज अ वेरी टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन. इट्स हैपनिंग. So limit workout करनी है, this integral is involved. Limit x approaches 0, 1 by x cube, integral 0 to x है, t ln 1 plus t to the power plus 4. So what we do is we write this like this, and then it is 0 by 0 indeterminate form. As x approaches 0, 0 to 0 is 0, so 0 by 0 indeterminate form. Now to work out this indeterminate form, we apply L'Hospital's rule, where we differentiate numerator and differentiate denominator separately. डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लेना है तो इंटीग्रल है, इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेना है, अगर लिमिट 0 टू x है और डेरिवेटिव लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा डेरिवेटिव और इंटीग्रल, बिकॉज दे आर रिवर्स ऑपरेशन. कैंसिल करके यार न्यूमरेटर में आ जाएगा x इंटू ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई x टू द पावर 4 प्लस 4, एंड डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. Right? Now we need to simplify this. Limit, we all step limit x approaches 0. Cancel x with x, and then ln 1 plus x by x. 1 by 3 भी है. This is 1, and then we have 1 by x to the power 4 plus 4. So if we take x approaching 0, it is 1 by 12. Yes, B answer. तो कुछ था ही नहीं इसमें, LH रूल लगाया और आंसर आ गया. डेरिवेटिव था तो इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेना है तो इंटीग्रल कैंसिल हो गया. Came in 2010. See, again the same kind of question, we have to work out a limit, and then limit is in the form of we have a integral form. तो डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल चाहिए, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई LH रूल वी हैव अ डेरिवेटिव, वी हैव अ LH रूल अप्लाई करना है तो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल करना होगा हमें. तो ये आप देखो एक फॉर्मूला उसमें देखना होगा इसमें, that comes in later stage. So in telling this, you know this formula, but for those who are not appearing this here, they might not have done this. So quickly I'll tell you the formula. If you have to differentiate, अगर simple 0 to x differentiate करना है ht dt, so we simply say hx, because the reverse operation is derivative and integral. But things change when we have 0 to or we can say fx to gx st dt. Then see, it's not going to be hx, because when we're integrating this and putting limits are fx and gx. So we're going forward, इंटीग्रेट करके आगे जा रहे हैं, बट पीछे आने के लिए हमने थोड़ा चेंज कर दिया इसको, बिकॉज वो फंक्शन चेंज कर दिया हमने. लिमिट फंक्शन चेंज हो जाएगा बिकॉज लिमिट एफ एक्स टू जी एक्स हो गई है. तो डेरिवेशन करते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला बन जाता है. यू रिप्लेस अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ टी, इन प्लेस ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस इंटीग्रेट में रिप्लेस कर दिया एच ऑफ जी एक्स, उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है एच डैश एक्स, जी डैश एक्स सॉरी, माइनस रिप्लेस एफ एक्स द लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ h into fx in place of t, sorry, into f dash x. So
those who are seeing this formula for the first time, they need to learn this formula. So it's like this: you replace upper limit in the integrand. That's what we have done here, replacing gx in place of t. Yeah, okay. And then multiply with the derivative of upper limit. Then do the same thing with lower limit. Replace lower limit and multiply with derivative of the lower limit. Yeah. So let's go back to this question. So we differentiate. यहाँ कर लेते हैं differentiate numerator and differentiate denominator. Derivative denominator is 2x. It's just 2x. So derivative of numerator is it replaces the upper limit f of secant square s. Right, derivative of secant square x to sec x into sec x tan x, sec square हो जाएगा. ऐसा ऑल्सो डिफरेंशिएट कर दिया हमने और लोअर साइड से कुछ वैल्यू नहीं आएगी. रिप्लेस करेंगे तो f2 होगा और डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0. राइट. सो हमने LH रूल लगाया है. we differentiate numerator and differentiate denominator. When differentiating numerator is not that easy because we have an integral there, so we need to differentiate an integral. तो फॉर्मूला में डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल का भी देखा है. Now I think it's done. ये तो 0 है. यहाँ से बस अपने x को पाई बाय 4 अप्रोच कराना है. डिनोमिनेटर इज पाई बाय 2 f of secant square as x approaches pi by 4 secant pi by 4 is like root 2 square 2, so it is f2. 2 times same here 2 and 10 pi by 4 is 1, so it is 8 by pi f2. yes, ये आंसर. सो सी इसमें था ही नहीं कुछ. फॉर्मूला अप्लाई करना था, डेरिवेटिव ऑफ लिमिट का फॉर्मूला करना था. So 2 more questions on limits. Now this is comparatively difficult question. Other questions we have done. So even this expression seems a little confusing. T approaches x and then it is t square fx minus x square ft over t minus x. The only thing we can do, obvious thing we can do is we apply LH rule here because we don't know function f and there's a function f also t भी है. like दो वेरिएबल आ रहे हैं इसमें. So let's apply LH rule, but LH rule में independent variable और वेरिएबल किसको मानेंगे. So tx को अप्रोच कर रहा है तो compare this with limit x approaches a. तो x चेंज कर रहा है, जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं चेंज हो रही है. तो x नहीं अप्रोच चेंज हो रहा है, t x के पास आ रहा है. t approaches x. तो differentiate with respect to t and we can take x constant. t approaches x. So differentiate with respect to t because t is changing thing. T is coming close to x, taking x constant. 2t fx minus x square f dash t. Sorry. Right. So and the derivative of denominator is derivative t is 1, x is 0. Right. इक्वल टू 1 के बारे में. Now t approaches x, जहाँ भी t उसकी जगह x आ जाएगा. So 2 और इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनी नहीं है. 2x fx minus x square f dash x equal to 1. We have x square f dash x is dy by dx, right, minus 2xy equal to minus x square. Oh, sorry, go to minus 1 equal to yes, right. Now this is, if we divide by x square, dy by dx minus 2 y by x
equal to minus 1 by x square. So it's a linear differential equation. It's a linear differential equation, and you know the way to be seen linear differential equation. पहले भी I told you earlier in earlier classes. This is the result. This is a variable dependent variable y into integrating factor equal to integral of integrating factor into right hand side dx plus c. ये हम सॉल्यूशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो यहाँ पे राइट, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ के आई एफ से निकालते हैं ई टू द पावर इंटीग्रल. तो यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ वाई है वो देखना है सारा, माइनस 2 बाई एक्स dx. So it's come out to be minus 2 ln 1 by x to the 1 by x square, coming out to 1 by x square. So it's like y by x square, 1 by x square, right hand side is minus 1 by x square dx plus c. Solve हो गया तो आया है. So y by x square equals to 1 by x to the power, yeah, minus dx by x to the power 4 plus c. So you know it is 1 minus 4 minus 3 x cube minus minus plus c y by x square equal to 0. So आ जाएगा एलसीएम लिया आपने y इक्वल टू 1/3x, तो ये तो टर्म मैच कर गई 1/3x प्लस सी एक्स स्क्वायर, सी इक्वल टू 2/3 आएगा constant. Now constant we can find because it is given that f1 equal to 1 in this question. Yes, f1 equal to 1 है, constant निकाल लेंगे because f1 equal to 1 है. तो ये चॉइस मैच कर रही है बिकॉज डाल के भी देख लो आप, f1 equal to 1 डालेंगे तो 1 equal to 1/3 प्लस c, so c equal to 2/3. ये चॉइस मैच कर रही है, c equal to 2/3. Right, so this is well, so this question came in 2008. So it's a little difficult because the question is a statement question, statement 1 and statement 2, and we check whether both of them are correct or not. And in this question, both of them are correct. Both of them will come out to be correct. So इसमें question में confusion ये होती है कि दोनों statement correct है, but whether statement 2 is a reason for statement 1 to be correct, whether statement 1 can be used to prove statement 1 to be correct. If there is a use of statement 2 and statement 1 to be correct, then it is answer A. If statement 2 is not a reason for statement 1 to be correct, has nothing to do with statement 1, then we say it is answer B. So both of them are correct, but second is not a reason of first, then answer B. If both of them are correct, but second is a correct reason for answer 1, or second is used to prove answer 1, then it is A. If one of them is wrong, then it's C or D. So I'll take a short break, 5 minutes, teaching since morning, and then I'll continue. So we've already done more than half the questions. So
So this is uh, I'll resume the class. So it is the statement 1 and the statement 2. So it's given that let's see, the two functions we can see here. One is fx, other is gx, and this is how they're defined. Fx equals to gx into sin x. First of all, we can check the second statement because that's an easy one. F dash 0 equals to g0, whether this is correct or not. We differentiate this. F dash x, for that we have to apply product rule. Derivative of gx, taking sin x constant. We take gx constant and differentiate sin x, and derivative is cos x. Now f dash 0, replace x equal to 0. We have g dash 0, sin 0 is 0, plus g0, cos 0 is 1. And you know this is 0, this is gone, so f dash 0 equal to g0. So that was easy to see. So this statement is correct. This is correct. Now after that we have to go for statement 1. Statement 1 is we need to work out the indeterminate form. Limit x approaches 0, gx cot x minus g0 cosec x. So we have to work out this limit. So first we can see is limit x approaches 0. We can because denominator ले आते हैं better है. It is gx cos x minus g0 sin x है. Sin x हमने common ले लिया because दोनों के denominator में sin x. Now we are in a ratio form and we can check as x approaches 0, denominator approaches 0 और numerator भी 0 approach कर रहा है. 0 g0 minus g0 वो भी 0 है. So it is 0 by 0 indeterminate form. So we can apply LH rule 0 by 0 indeterminate form to work out this indeterminate form. But before we apply LH rule, it is advisable that we can, because the answer is in terms of f. Answer f की form में है. So f double dash x है तो g को we can replace g by sin fx by sin x. So limit x approaches 0, we express g as fx by sin x. So fx cot x हो जाएगा because cos x is already there. Minus g0 divided by sin x. Because answer needs to come in terms of f. That's why we have done that. Answer f की form में आना चाहिए. Limit x approaches 0. Derivative is f dash x taking cot x constant plus fx, derivative of cot x is minus cosecant square x. Derivative of g0 is 0 constant. Divide by cos x. So again we can take LCM. So it is f dash x cos x minus fx by sin x. fx by sin x को divide by sin x. The limit x approaches 0. So this is gx. Limit x approaches 0. f dash x cos x minus gx divide by sin x. अभी हमें आंसर में वी वांट टू शो दिस इक्वल टू f डबल डैश 0. सेकंड डेरिवेटिव आना चाहिए तो मैं एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना. वैसे भी व्हेन वी रिप्लेस x इक्वल टू 0, सो ये बन रहा है f डैश 0 cos 0 is 1 minus g0 डिवाइड बाय sin x. अब इंडिटरमिनेट फॉर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर अप्रोचेस 0. तो यहाँ पे देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, राइट? तो हमें पता ही है ये वी नो दैट f dash x इक्वल टू 0. हमने शो भी किया f dash x इक्वल टू f dash 0 इक्वल टू g0. और ये सेकंड स्टेटमेंट का यूज भी होगा इसमें. अब देखो f dash 0 इक्वल टू g0 बिकॉज तभी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया तो टाइप 0 बाय 0. तो मैं सेकंड स्टेटमेंट को यूज कर लिया. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, स्टेटमेंट करेक्ट हो गई और सेकंड का यूज तो इसमें आ ही रहा है. So we have to, so answer, if the statement is correct, then answer is A because we are using second to prove this. So we again apply LH rule. Limit x approaches 0. We apply LH rule on this. Derivative of f dash x is f double dash x taking cos x constant plus f dash x constant, derivative of cos x is minus sin x.
minus g dash x. So ये g ना आए तो बेटर है. नहीं थोड़ा गलत हो गया, cos था नीचे. I think I did a mistake. If you go after taking after applying LH rule, so let's go back. So we started from here, then we apply LH rule on this. We wrote this. Yes, after yes LH rule. Then after that again we write this as we took sin x and the cos x was already there. That was a mistake. So cos x was already there in denominator, and then so in denominator will be sin 2x by 2. Now limit x approaches 0, so it's advisable that we can again write gx as fx into cosec x. G dash आएगा g dash x. Let's check. Let's differentiate करते हैं. मुझे लग रहा है f. I'm confused whether to express in terms of f or not. So g f double dash x, derivative of f dash x is f double dash x taking cos x constant plus f dash x into minus sin x minus g dash x. It is denominator is 2 cos 2x by 2. This is fine. When we replace x equal to 0, we are getting f double dash 0 here. And on this side we have, this is approaching 0 minus g dash 0. Divide by approaching 1. That's g dash 0. G dash 0 is 0. ये given है. So that's वो दिखा नहीं था. G dash 0 is 0 given. So this is given in the question that g dash 0 is 0. ये भी 0 हो गया. So आ गया हमारा f double dash 0. यही हमें शो करना था. Statement 1 is correct. And we have used statement 2 to prove statement 1. So this answer is A. So see, this question is not an easy question. When this question came in exam, so everyone had the same feeling that this was a difficult question. कुछ लोगों ने किया भी था तो आंसर बी निकाला था, लगा था स्टेटमेंट 2 का तो कोई यूज ही नहीं है स्टेटमेंट 1 में. लेकिन यस, अनदर थिंग इसके इसमें ये भी देख सकते हैं कि ऐसे भी थोड़ा आसान होता है. अगर आप इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश 0, वो 0 आ जाएगा. अब सेकंड डेरिवेटिव लेके देखेंगे 0 आ जाता है. तो इसमें आई वाज डूइंग वेरी केयरफुल कि एफ डबल डैश एक्स आ जाए. अब अगर इसको केयरफुली नहीं भी करेंगे, करते रहेंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये आ जाता है एफ डबल डैश एक्स बाय 2. ऐसे आंसर आ जाता है. एक बार को लगता है गलत है. ये गलत नहीं है, ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश 0 ये 0 है, तो आंसर 0 आ गया. आंसर करेक्ट है क्योंकि एफ डबल डैश 0 इज 0. सो ये 0 आया आपका आंसर, और ये भी 0 है, तो प्रूव हो गए. फॉर्म डिफरेंट हो गई. एफ डबल डैश 0 इज 0, रिपीट एफ डबल डैश 0 इज 0 है, तो एक्चुअली में आपको 0 शो करना था. तो आप जो सिंप्लीफाई, अगर आप बिल्कुल जैसे मर्जी करते रहेंगे आ तो जाएगा आंसर, तो उससे ये आंसर आ जाता है. और ये 0 है तो आंसर 0 है, जैसे करेक्ट हो गया. बट प्रॉब्लम कम्स व्हेन you don't know that f double dash 0 is 0, and then you try to express in terms of f double dash 0, and that is taking time. कि अगर f double dash 0 फॉर्म में लाना है तो बड़ा ध्यान से इसको हम लेके चल रहे थे कि f double dash ही होना चाहिए. g की जगह g को f में कन्वर्ट किया क्योंकि f की फॉर्म लेके आनी है. so, so it was a difficult question just from exam point of view.
Now see, this is fx function is defined like this. Fx is x minus greatest integer x, you know, is a fractional part of x. ये function है. If mod of x, greatest integer of x is odd. अभी समझते हैं, पहले इसको देख लेते हैं. This is, ये है 1 माइनस कॉमन लेके x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. So it is 1 minus fractional part of x. If this came in again J 2010. So 2010 was a very difficult exam. So a lot of difficult questions are from 2010. So low scoring in difficult exam था 10 का. So it is if greatest integer of x is even. So आप देख सकते हैं कि अगर हमारी नंबर लाइन है, this is 0, this is 1. So between 0 and 1, you know, जो भी वैल्यू है, greatest integer x even है, तो यहाँ पे डेफिनेशन चलेगी 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. 1 to 2 में डेफिनेशन चलेगी ग्रेटेस्ट, ये कोई वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड है, सो यहाँ पे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. माइनस ऑल्टरनेट है, -1 to 0 इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. So let's try to sketch the graph of this. So between, and you know fractional part of graph of fractional part of x, ये तो पता ही है, fractional part of x का ग्राफ है, ये ऐसे चलता है, यहाँ पे ऐसे चलेगा. तो ये तो हमारा सही है बिल्कुल, -1 से 0 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. नाउ 0 से 1 में हमें ग्राफ बनाना है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ये ग्राफ है तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ये ग्राफ आएगा ऐसे. फिर 1 यूनिट ऊपर मूव कर देंगे, फिर मूव 1 यूनिट अप, then it is like this. So you can see this is, ये रेड ग्राफ है, ये ग्राफ आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है. सो दिस इज द ग्राफ फ्रॉम -1 to 1, -1 से लेके यहाँ तक ये ग्राफ, और फिर ये ग्राफ. उसके बाद ये पीरियोडिक ही है, उसके बाद तो चलते ही रहेगा, ये पीरियोडिक फंक्शन है, उसके बाद तो सारा रिपीट होगा. एंड -10 to 10 हमें ये करना है fx into f cos pi x. सो बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन है, हमें ये करना है, इंटीग्रेट करना है -10 से 10 लेके जो fx into cos pi x dx. एंड cos pi x ये पीरियोडिक है, फिर पीरियड 2, यहाँ जो cos बनाएंगे ये वाला ग्राफ, ये पीरियोडिक है, वैसे जाएगा something like this. तो सॉरी, पीरियड ऑफ cos is 2, तो ये पूरी साइकिल जाएगी ऐसे. Yeah. So what we're going to do, first thing is we'll see that if it is a periodic function, whatever it is between -1 to 1, वही 1 to 3 में होगा, वही -1 to 3 में होगा. So we can say this is 10 times, ये 20 बैंड है हमें, और हर एक विड्थ 2 पे है. So what we do is 10 times -1 to 1 fx cos pi x dx. ये कर लिया पहले हमने. कैसे? क्योंकि हमारा -1 to 1 में भी आगे चलता जाएगा, फिर 1 से लेके 3 भी ये जाएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा. तो ऐसे 10 इस तरह के हमारे ट्राइंगल्स हैं, बिकॉज हर ट्राइंगल की विड्थ 2 है, हमें 20 तक करना है. सो 10 ट्राइंगल्स. सो विल फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 ट्राइंगल मल्टीप्लाई विद 10. यही कर रहे हैं, इंटीग्रल 1 ट्राइंगल मल्टीप्लाई विद 10. सो इट इज 10 टाइम्स -1 to 1, एंड देन fx को रिप्लेस कर दिया हमने. fx दो केस बना लिया, -1 to 0. ये दिस डेफिनेशन थी ये. 1 माइनस x माइनस 1, x को मूव किया x प्लस 1, राइट, ये x प्लस 1 है, और ये 1 माइनस x प्लस 1 1 माइनस x प्लस 1 इंटू cos pi x dx. 0 to 1 में 1 माइनस x है. सो वी हैव टू वर्क आउट दिस, वी हैव टू सॉल्व दिस, दीज टू. अब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अब 10 से मल्टीप्लाई भी करना है.
So if we solve this, we have to some of you who are not going to appear in 2013, they might not know this. We apply by parts here. We take this as first part and this is second part and apply by parts. So it is 10 times. So x plus 1 integral minus 1 to 0 cos pi x dx minus in derivative cos x plus 1 is 1. इसका इंटीग्रल आएगा sin pi x by pi. थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है 10 टाइम्स, लेकिन हो गया इतना मुश्किल नहीं. x प्लस 1 डेरिवेटिव cos pi x is sin pi x by pi minus 1 to 0 and this side also plus sin pi x is minus minus plus हो गया pi x by pi. और एक पाई पहले था तो पाई स्क्वायर हो गया. Now we replace 0. Sin 0 is 0. ये क्या replace minus 1 and again sin pi is 0. ये तो contribution नहीं आ रही, यहाँ आएगी. ये लिमिट है हमारी minus 1 to 0. When we replace 0 it is cos 0 1 1 by pi square. When we replace minus 1 it is cos of minus pi. Cos minus pi is minus 1 minus minus plus 1 by pi square. कर लेना आप 2 by pi square. सेम वे इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 2 by pi square आता है. So ये 4 by pi square 10 times 4 by pi square. वैल्यू निकालनी है. अच्छा पाई स्क्वायर बाय 10 बाहर भी है, पाई स्क्वायर बाय 10 बाहर भी है, कैंसिल हो गया इससे, तो आंसर इज 4. नहीं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है. तो पहले हमने एनालाइज कर लिया कि किस तरह का फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है या 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है. फॉर एग्जांपल कि व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर ऑड होगा, वैसा इंटरवल जिसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर ऑड है. सो ये इट इज ऑड टू इवन वाले केस में हो रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और उसके इवन टू ऑड वाले में इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है. सो नाउ द एडवांटेज इज दैट कि हमने देख लिया कि ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 है, बाकी सब तो रिपीट करेगा. सो 20 इंटरवल तक जाना है तो 10 साइकिल हो गई. हर साइकिल का एरिया निकाल के 10 टाइम्स इसका सॉरी डिफरेंट इंटीग्रल निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया. This is also interesting and easy question. So it is for every integer n, an and bn be real numbers. Let the function is given by an plus sin pi x, ये फंक्शन है. if x belongs to इवन इंटीजर से शुरू करके और तक जाना है, it is bn plus cos pi x, x belongs to odd, starting from odd integer till even integer. See, question is very easy. Easy question है, कुछ है नहीं. fx is continuous, then what will the following relationship hold? fx continuous है for all values, continuous हर जगह for all integers. तो हम कोई जनरल ले लेते हैं किसी एक पॉइंट पे. हमने ले लिया कैसे बना लेते हैं हम पास में. पहले x एट x इक्वल टू इवन पे, इवन इंटीजर पे चेक कर लेते हैं. 2 1 पे चेक करना है, तो 2 1 पे चेक करना है. राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं पहले 2 1 पे. तो राइट साइड क्या होगी 2 1 की, x बिलोंग्स, ये यूज होगी, ये इंटरवल यूज होगा 2 1 to 2 1 plus 1. सो ये लिमिट x अप्रोचेस 2 1 फ्रॉम प्लस साइड, नहीं कौन सी डेफिनेशन अप्लाई होगी, 2 1 की राइट साइड, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट साइड ये डेफिनेशन आ रही है an प्लस साइन पाई एक्स. सो x की जगह 2 1 डाला तो साइन 2 1 पाई 0, सो इट इज an. सेम वे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 1 के लेफ्ट वाले डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है. लिमिट x approaches 2 1 from left, we have bn plus cos pi x, bn cos 2 pi n. तो cos even multiple of pi is 1.
पाई एक्स है, राइट। वन मल्टीपल आएगा cos 2n, cos 2n पाई, cos 2n पाई इज 1, सो ये आ गया। तो दोनों इक्वल होने चाहिए बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, वी हैव an इक्वल टू bn प्लस 1, सो an माइनस bn इक्वल टू 1, सो इट्स अ बी चॉइस। बट ये तो हमने चेक किया जब इवन इवन इंटीजर के ऊपर हमने कॉन्टिन्यूटी मेक श्योर करी है। अब और पे भी करना होगा, x इक्वल टू 2n माइनस 1 कर दिया फॉर एग्जाम्पल हमने, तो इसकी इस पे राइट हैंड लिमिट जो होगी 2n माइनस 1, कौन सा इंटरवल यूज होगा, 2n माइनस 1 की राइट साइड ये है bn प्लस एस, तो ये हमने राइट हैंड लिमिट से रिप्लेस ही करना है इसमें, तो आएगा bn और ये टॉड मल्टीपल ऑफ यस इट्स कमिंग आउट टू बी 2n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे तो x की जगह नहीं सॉरी 2n पे नहीं, यस 2n माइनस 1 पे निकाल रहे हैं, 2n माइनस 1 की राइट हैंड लिमिट राइट साइड ये है, सो 2n माइनस 1 रिप्लेस किया cos of 2n minus 1 into pi, so it's a minus 1, so bn minus 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, so अब इंटरवल देखना है 2n माइनस 1 के लेफ्ट पे। अब 2n माइनस 1 के लेफ्ट पे देखना है तो यहाँ पे आपको ये करना होगा n की जगह n माइनस 1, इफ यू रिप्लेस n by n माइनस 1 इट इज 2n माइनस 2 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 1 के लेफ्ट पे ये इंटरवल आ रहा है, नंबर लाइन पे ये आपका 2n माइनस 2 है, ये 2n माइनस 1 है, ये 2n माइनस 3 2n प्लस 1 है, तो 2n माइनस 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे यू नो यहाँ यहाँ इंटरवल ये इस इंटरवल लेफ्ट हैंड 2n माइनस 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इस इंटरवल में आएगी 2n माइनस 2 से 2n माइनस 1 तक। इसके लिए हमें ये करने के लिए हमें यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 करना होगा, यहाँ माइनस 1 करना होगा, तो डेफिनेशन आ रही है an माइनस 1 इंटू साइन पाई एक्स, an माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स, इस डेफिनेशन में रिप्लेस करना है हमें, राइट। लिमिट h नहीं, लिमिट x अप्रोचेस 2n माइनस 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो रिप्लेस करा हमने, आ गया an माइनस 1 प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 0 आ गया, इक्वेट करके आता है an माइनस 1 इक्वल टू bn माइनस 1, देखिए कौन सी चॉइस है, an माइनस 1, ये डी चॉइस, बी और डी दोनों हो गए। तो क्वेश्चन बस नीटली करना है आपने, जरा जल्दी करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो फंडा ये कि ऑड पे भी करना है इवन पे भी करना है, वी हैव टू मेक श्योर एंश्योर कंटिन्यूटी, वी डू इट एट इवन मल्टीपल x इक्वल टू 1 पे इवन इंटीजर पे करा है और ऑड इंटीजर पे भी किया, दोनों पे किया है। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी आई से, इसमें तो ये फंक्शन गिवन है चेक करना है, फॉर एग्जांपल f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू माइनस, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट लगा देंगे, f(x) is continuous at x equal to minus pi by 2, yes, left hand limit minus 2 नहीं सॉरी माइनस पाई बाय 2, यहाँ रिप्लेस कर दिया माइनस पाई बाय 2, 0 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, यहाँ रिप्लेस करना है, वो भी 0 है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बी चॉइसेस f(x) is not differentiable at x equal to 0। अब 0 पर डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये यूज करना है और राइट के लिए, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस चेक करिए, 0 रिप्लेस कर रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है लेफ्ट साइड पे, सो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगाते हैं बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, वो भी चेक कर लिया, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 मतलब cos को डेरिवेटिव लेना है, वो sin x हो जाएगा 0, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इज x माइनस 1 का डेरिवेटिव, यस वो 1 आ रहा है, so if डेरिवेटिव था सॉरी, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये करेक्ट हो गया, राइट। तो बाकी चॉइस भी डिफरेंशिएबल, 1 पे डिफरेंशिएबल वही चेक कर लेंगे, लेफ्ट 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 1 डाल के देख लिया दोनों जगह, 1 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आएगा 1 आ रहा है, वो राइट हैंड डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव आ रहा है वही 1 आ रहा है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन,
both the derivatives are 1 at x equal to 1, left hand derivative equal to right hand derivative equal to 1, सारे सब करेक्शन हो गए. डिफरेंशिएबल एट 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2, तो यहाँ पे ये माइनस पाई बाय 2 है, माइनस पाई बाय 2 to 0 है, 0 to 1 दैट वे. अभी हमारा 3/2 ये माइनस 1.57 यहाँ आएगा कहीं, 1.57 माइनस 1.57 राइट, यहाँ आ रहा है. तो माइनस पाई बाय 2 जीरो की डेफिनेशन है, माइनस पाई बाय 2 जीरो की कॉसेक, माइनस कॉसेक इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, बिकॉज इस इंटरवल ये लास्ट डी पार्ट है, इसमें डेफिनेशन फंक्शन की माइनस कॉसेक्स आ रही है और वो माइनस कॉसेक्स डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में. ये चॉइस भी करेक्ट है, सो ऑल 4 चॉइसेस आर करेक्ट. So we'll have 2 more, but last one we'll do in the next session. We'll just do this as the last question. This is interesting question. Fx equals to x cube plus e to the power x by 2. This function fx is given, and gx is f inverse x, inverse function of fx. f को inverse करेंगे और gx आ रहा है, so gx is inverse of fx. So generally in these questions में ऐसे कर लेते हैं, दोनों साइड का f ले लेते हैं, f of gx और f of f इनवर्सेस, इनवर्स को उल्टा कर दिया तो वो x आ गया. सो f of gx इक्वल टू x है. यहां से शुरू करेंगे, राइट. सो यहाँ करना है कि हमें डेरिवेटिव देखना है, g'1 निकालना है, डेरिवेटिव तो लेना होगा, g'1 निकालना है. डिफरेंशिएट किया है f' gx कांस्टेंट रखा इंटू g'(x), चेन रूल लगा रहे हैं, इक्वल टू 1. हमें g'1 चाहिए, 1 रिप्लेस कर दिया, इसका डेरिवेटिव लिया चेन रूल f' एंड देन g का डेरिवेटिव g'. 1 चाहिए तो 1 रिप्लेस कर दिया, g'1 f' g1 इंटू g'1 इक्वल टू 1, राइट. अब g'1 दिख तो रहा है, लेकिन इसका क्या होगा ये देखने के लिए हम ऐसे देख रहे हैं, सी ये, और हमें f फंक्शन गिवन है, f का f' लिया हमने 3x² प्लस e to the power x by 2 डिवाइड बाय 2. दिस इज f'(x). Now see, g1 wait, so यहाँ देखते हैं, ये भी गिवन है, यहाँ x, यहाँ भी 1 रिप्लेस कर दिया, f ऑफ g1 इक्वल टू 1. तो यहाँ से ये आएगा, हमें अगर हम देखें कि फंक्शन f में देखो आप क्या रिप्लेस करें कि 1 वैल्यू आए. सो g1 यहाँ से 0 आ रहा है, फंक्शन f ये रहा, देखो ये हमने यूज किया है. हमने कहा कि किस, इसको कुछ भी समझ लो, t समझ लो, एफ टी इक्वल 1, किस t की वैल्यू पे फंक्शन f1 बनेगा, फंक्शन f1 बनेगा, बाई एक्सप्रेशन देखा आपने, x इक्वल टू 0 रिप्लेस करोगे तब 1 बन रहा है, 0 रिप्लेस करने 1 बन रहा है, f0 इक्वल टू 1 बन रहा है. तो अगर इनको डायरेक्ट कंपेयर करें तो यहाँ से आगे देखो तो 1 डाल के g1 इक्वल टू 0 बन रहा है, g1 इज 0, और g1 यहाँ 0 डाला तो हमारा आ रहा है f'0 g'1 इक्वल टू 1. तो हमें f'0 चाहिए, g1 आ जाएगा, f'0 डेरिवेटिव लिया हमने, f'0 रिप्लेस किया, f'0 इज हाफ, so half into g'1 equal to 1, so d'1 equals to 2. Yeah, let's check the answer first. Yes, so it's an interesting question. हमें पहले हमने इनवर्स फॉर्म था, इनवर्स फॉर्म हटा के दोनों साइड का f ले लिया, तो f इनवर्स ऑफ f इज कैंसिल होकर x बन गया, डेरिवेटिव लिया, ये आ गया. हमें g'1 निकालना है, हमें 1 डाल दिया, लेकिन g'1 यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन इसका क्या करेंगे, इसे करने के लिए फंक्शन f की 1 था हमने, तो f से हमने f' ले लिया, f' हमें पता है फंक्शन में, लेकिन f' के अंदर क्या रिप्लेस करेंगे, g1 रिप्लेस करना है. तो g1 कहीं नहीं दिख रहा था, मैं g1 के लिए मैं जो ये रिलेशनशिप गिवन थी, हमने x इक्वल टू 0 रिप्लेस किया, x इक्वल टू 1 रिप्लेस किया, वहां में g1 दिखा, और वहां से हम निकाल पाया f से. तो f ऑफ g1 इक्वल टू 1 है, तो हमने ये देख लिया कि f की किस वैल्यू पे f1 बनता है, किस x की वैल्यू पे f1 बनता है, तो 0 पे f बनता है, सो g1 इज 0, g1 0 मतलब f'0, f'0 fx is given, we take derivative and replace x equal to 0. Right, so
It's an interesting question. So we'll finish webinar here. And I could not discuss the last question. I'll do it. I don't want to keep you for long. So it's already quarter to 11. So I'll just I'll upload the recording. Those who could not because of the internet or a computer, if they could not understand all the questions, they can go through the recording at later stage. Thank you. Good night. Bye bye.